Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. So welcome to our video link online class, grade 3 subject English, date 26th of July 2021. So student, open your English book, page number 1. The first chapter is the red rose. I am going to explain this chapter. इस चैप्टर में आखिर क्या बात की जा रही है वो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं. So let's start. Once there was a beautiful red rose living in a small garden along with many kinds of colorful flowers and vegetables. एक दुखा की बात है कि बहुत ही खूबसूरत सा गुलाब का फूल जो एक छोटे से गार्डन में मुख्तलिफ फूलों कलरफुल फूलों और सब्जियों के साथ रहता था. They all talked to each other and thanked Allah for His blessing. वो आपस में एक दूसरे से बातचीत करते थे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे इन सारी नेमतों के लिए. A little sparrow who visited the garden and the red rose were friends थे. छोटी सी चिड़िया जो कि उस गार्डन में आती थी और जो वो रेड रोज की दोस्त थी. They used to chatter about anything and everything. वो हमेशा किसी न किसी चीज के बारे में बातचीत करते रहते थे. One day a cool breeze was blowing and all the flowers in the garden were laughing when suddenly a tennis ball fell in the garden near the rose plant. एक दिन क्या हुआ, बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी, सारे फूल जो है वो झूम रहे थे और बहुत खुश थे. तो अचानक क्या होता है, टेनिस बॉल जो है वो उस गार्डन में आके गिरती है उस गुलाब के फूल के पास. A child ran to the garden to find his ball. तो एक बच्चा जो है वो भागा आता है उस फूल के पास उस गार्डन में अपनी बॉल को ढूंढने. He noticed that the garden was very beautiful. He plucked some of the small daisies and plucked all at the grass. तो वो देखते हैं कि गार्डन जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, तो वो कुछ फूल वहाँ से और कुछ जो है वो तोड़ लेता है. Then he saw the red rose and was about to pluck it, but the small thorns bit his finger. तो वो एकदम क्या देखते हैं कि वहाँ पे जो खूबसूरत सा जो गुलाब का फूल है वो भी है, तो वो जैसे ही उसको तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है उसकी फिंगर पे कांटा लग जाता है. So he left the garden and went back to his friend. तो वो उस गार्डन को छोड़ के अपने दोस्तों के पास चला जाता है. All the other flowers were worried for the daisies and the rose. बाकी जितने भी आगे फ्लावर्स जितने भी फूल थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और दुखी थे डेजीज के लिए जो वो तोड़ के ले गया था और रोज के लिए. The next day the little sparrow flew into the garden and said, "Look, there are thick clouds in the sky. It is going to rain." The red rose neither smiled nor replied. तो अगले दिन क्या होता है, वो छोटी चिड़िया जो है वो गार्डन में उड़ती उड़ती आती है, उन सबसे कहती है कि देखो कितने अच्छे बादल हैं, कितने घने बादल हैं, लगता है बारिश आने वाली है. तो उसकी बात सुन के जो गुलाब का फूल है ना तो वो मुस्कुराता है और ना ही कोई जवाब देता है. This sparrow asked what happened, why is everyone sad? तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, यहाँ पे सब क्यों उदास हैं. The sunflower told the little sparrow whole story. She became upset. तो वहाँ पे जो सनफ्लावर था वो उसको जो है वो स्पैरो को चिड़िया को पूरी स्टोरी बताता है कि कल ये सब हुआ. तो वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है. The little sparrow had an idea and said, उस छोटी सी चिड़िया के पास एक आइडिया था. वो कहती है, let's all pray to Allah to help us. तो क्यों ना हम सब जो है वो अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमारी मदद करें. All the plants and flowers prayed silently for protection. तो खामोशी से सारे पौधे फूल जो है वो अल्लाह ताला से अपनी हिफाजत के लिए दुआ करने लगे. The next morning, when the red rose opened his eye, he saw that the little sparrow was sitting beside him. तो जैसे ही अगले सुबह गुलाब का फूल जो है अपनी आंखें खोलता है तो क्या देखता है, वो छोटी चिड़िया उसके बाजू में आके बैठी होती है. Why are you here so early? asked the red rose. तो वो उससे पूछते कि आप आज सुबह इतनी सुबह इतनी जल्दी यहाँ कैसे? I have good news for all of you. मेरे पास एक गुड न्यूज़ है. वो चिड़िया हम सबसे कहती है कि मेरे पास हम सबके लिए एक गुड न्यूज़ है. Just look at the gate of the garden. सिर्फ गार्डन के गेट की तरफ देखो. They all saw that there was a fence around the garden and a notice board hanging on the gate. तो वो क्या देखते हैं कि
गेट पे नोटिस बोर्ड लिखा होता है, तो नोटिस बोर्ड में उस नोटिस बोर्ड में होता क्या है, डू नॉट पिक द फ्लावर्स, यहाँ से कोई भी फूल नहीं तोड़ेगा। The red rose was overjoyed to see the board, तो रेड रोज होती है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है उस बोर्ड को देखने के बाद। Soon there were dark clouds in the sky, then it started raining, all the flowers were smiling and thanking Allah for protecting them. They were chatting again, everyone was happy in the garden. तो अचानक से काले बादल आते हैं, बारिश स्टार्ट हो जाती है, सारे सारे फूल जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने उनकी हिफाजत की और चहचहाने लगते हैं और सब जो है वो गार्डन में बहुत ज़्यादा खुश थे। So class, moving to the exercise of this chapter, we will do question answers. Question A, what things are found in the garden? गार्डन में क्या चीज जो है वो हमें पाई गई थी? कलरफुल फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स आर फाउंड इन द गार्डन। क्वेश्चन बी, व्हाट डिड द बॉय डू? उस लड़के ने क्या किया था? ही प्लग सम डेजीज एंड ग्रास। क्वेश्चन सी, व्हाई वाज द रेड रोज अपसेट? तो रेड गुलाब जो है वो लाल गुलाब क्यों अपसेट था, क्यों था उसका? The red rose was upset because the boy tried to pluck it. Question D, what did the little sparrow ask the flowers to do? The answer of this question is the little sparrow asked the flowers to pray to Allah to help them. Question E, what did they see the next morning? उन्होंने अगली सुबह क्या देखा? Answer is they all saw a fence around the garden and a notice board which says do not pick the flowers. So class, the next page, page number 4, I am giving you a homework. Make sentences of the following words. यहाँ पे कुछ words दिए गए हैं जिसके आपको जो है वो sentences बनाने हैं. The first word is visited, second is fence, third is plug, fourth is chatting, and fifth is protection. Do your work very carefully, class, and submit your work assignment on Saturday, 31st of July 2021. Take care of yourself. Allah Hafiz.